अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीडिया। दिस इज उमर तारिक। सो तकरीबन 5-6 हफ्ते पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, एक वीडियो लगाई थी कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट्स में लिखो, इंस्टाग्राम पे लगाओ, तो आई विल आंसर देम। सॉरी इट टुक सो लॉन्ग, लेकिन फाइनली आई गॉट टाइम टुडे टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, तो वी गोना डू दैट टुडे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम। यहाँ पर इंस्टाग्राम में हमारा पहला क्वेश्चन है जी जफर राना का कि इज डूइंग ऑब्जर्वरशिप बेटर देन मेडिकल स्क्राइब जॉब? I have 3 LORs from last year, but all of them are clinical LORs. Should I do observership in hospitals to gain LORs, or should I do medical assistant job in clinic? यार उस पे इट रियली डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप सिर्फ स्क्राइब की जॉब कर रहे हो और आप सिर्फ नोट्स डाल रहे हो लेकिन पेशेंट्स को नहीं देख रहे, तो दैट्स नॉट दैट वैल्यूएबल एज एन ऑब्जर्वरशिप। लेकिन अगर आप एक मेडिकल असिस्टेंट काम कर रहे हो जहां पर यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, यू आर डूइंग अ लॉट मोर, देन दैट इज एक्चुअली बेटर देन ऑब्जर्वरशिप। बेसिकली the terminology doesn't matter that much, जितना ये मैटर करता है कि आप काम क्या कर रहे थे। अगर आप पेशेंट्स को हाथ लगा रहे थे, उनको एग्जामिन कर रहे थे, तो फिर चाहे वो ऑब्जर्वरशिप है, हालांकि ऑब्जर्वरशिप में टिपिकली दे डोंट अलाउ इट, अदरवाइज इट्स एन एक्सटेंशन। तो दैट डिपेंड्स। टिपिकली आई डोंट थिंक कि अगर आपकी खाली स्क्राइब करने की जॉब है तो दैट वुड बी एज वैल्यूएबल। लेकिन अगर आपकी क्लिनिकल जॉब है, आप पेशेंट्स के एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो दैट्स बेटर। अच्छा, नेक्स्ट, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट रिमोट रिसर्च ऑप्शंस for stay-at-home mom? Unfortunately, there aren't that many. There are, but you just need to apply very widely. Send emails to, I would say, more than 1,000 different attendings in US, and hopefully you can find someone. We have our own Meridia research internship, but that is actually focused towards recent graduates or younger medical students. I have a 2-year clinical gap and still managed only 238 year of graduation 4 years ago. Can giving step 3 improve my chances? Absolutely. अगर आपकी कोई भी बंदा है, उसकी सीवी में इस तरह की कोई भी गैप है, स्कोर्स कम है, तो जो पहली चीज मैं उससे कहता हूँ कि स्टेप 3 लो और अच्छा स्कोर लो और लॉन्ग टर्म रिसर्च करो। तो आई थिंक यस, टेकिंग स्टेप 3 will significantly improve your chances. To do house jobs or not while preparing for steps, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लीज वो देख लो हाउस जॉब के बारे में कि हाउस जॉब इज इट ऑल वर्थ इट और नॉट। प्रॉब्लम ये है हाउस जॉब का, व्हाट आई फील इज कि अगर आपने सिर्फ यूएस में इवेंचुअली आना है एंड यू नो फॉर श्योर आप सारा कुछ करके आ रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप हो कि शायद वापस जाऊं मैं बाद में, या आपका जो है आजकल का जो सिनेरियो है कि पैथवेज हैं, तो उसमें पैथवे अगर आप हाउस जॉब कर लेते हो तो आपके ECFMG certification easy है। I think this is a temporary thing, but excluding the COVID emergency or your ECFMG certification के pathways, I would not recommend house job to anyone. Yes, you learn a lot, but I think that 1 year is better spent अगर आप टिक के पढ़ाई बेहतर कर सको या आप रेजिडेंसी जल्दी स्टार्ट कर सको। That's my personal opinion. There's a lot of difference in opinion. There are some other experts who don't suggest skipping house job and they recommend it. I personally didn't do it. None of my siblings or my cousins or anybody I know, none of them did it, and I didn't recommend it to them either. अगला है जी, how to match in dermatology. It's very very tough. ये जो मेरी टफ स्पेशलिटीज वाली वीडियो आपको देख लो, उसमें मैंने यही बताया कि जितनी भी टफ स्पेशलिटीज है उनका ज्यादातर यही एक राउट होता है कि आप लॉन्ग टर्म रिसर्च करते हो, अपनी कमिटमेंट दिखाते हो, या आप कोई दूसरी नॉन रिलेटिवली लेस कंपैरेटिव स्पेशलिटी में ट्रेनिंग करते हो और फिर आप शिफ्ट करते हो डर्मेटोलॉजी में। Please tell which hospitals are offering clinical rotations in person to IMGs which are not much costly. How to get clinical rotations, who to contact. देखिए अनफॉर्चुनेटली ना इस पे कोई है नहीं इस वक्त। मेरे पास आई डोंट हैव एनी वे ऑफ नोइंग कि कौन से अस्पताल ऑफर कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। आप गूगल कर लो। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से चीजें थोड़ी पिछले 1-1.5 साल से बंद रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। I don't have any such list, and I don't know which hospitals are offering it or not. As a first-year medical student in Pakistan, what should I do to improve my CV, and what is the ideal timeline for taking steps? As a first-year student, what I would recommend कि आप शुरू से steps की किताबें पढ़ना शुरू करें, first year, second year, third year, fourth year में। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो
कॉलेज में जो कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी जो पढ़ रहे हो, साथ साथ आप कैप्लन की किताबें पढ़ो, साथ साथ आप उनके लेक्चर सुनो, सारी तैयारी साथ साथ करो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टार्ट अर्ली, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई विल से कि स्टार्ट अर्ली। व्हाट आई मीन बाय दैट इसके ये जो सारे काम है ना, रिसर्च करना, ऑब्जर्वरशिप्स करना, ये आप जल्दी भी कर सकते हो। आई डिड माई फर्स्ट ऑब्जर्वरशिप व्हेन आई वाज अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो ये छोटी मोटी रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दो। इनिशियली आपको जहां आपके मेडिकल स्कूल में मिल रहा है, जो मिल रहा है वो करो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई यूएस में रिमोट रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो बहुत मुश्किल है, वो करो। इलेक्टिव्स करो, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जो आपको मिल सकते हैं। बहुत से लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में रिसर्च इलेक्टिव करते हैं क्योंकि वो मिलना आसान है जब आप जूनियर होते हो, और उसके बाद वो क्लिनिकल इलेक्टिव्स करते हैं थर्ड फोर्थ ईयर में। सो आई थिंक सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्ट अर्ली, प्रिपेयर अर्ली, सो यू प्लान बेटर एंड यू डू थिंग्स बेटर, you know more, right? How realistic is it doing 2 residencies? I am then I know a lot of people who have done double residencies. लोग करते हैं, जिसमें मैंने कहा मैं काफी लोगों को जानता हूँ, वो इसीलिए करते हैं कि पहले वो एक लेस कंपैरेटिव, रिलेटिवली लेस कंपैरेटिव स्पेशलिटी में जाते हैं, पीड्स, न्यूरोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, और फिर उसके बाद वो हाईली कंपैरेटिव स्पेशलिटी में जाते हैं। तो people do that. Is it easy? No. But it's doable. Like I said, people have done it multiple times. Would you advise medical students wishing to match into competitive specialties to help build their CV? देखो वो ट्रेडिशनल चीजें ही हैं सारी, के रिसर्च करो, इलेक्टिव्स करो। लॉन्ग टर्म रिसर्च का ज्यादा फायदा होता है, शॉर्ट टर्म रिसर्च करो, लेकिन उसमें कोशिश करो कि आपका नाम आ जाए, पोस्टर्स हो, आपके एब्स्ट्रैक्ट्स हो, प्रेजेंटेशंस हो। ठीक है, तो इन चीजों का काफी फायदा हो जाता है अगर आपकी एज अ मेडिकल स्टूडेंट किसी भी इंटरनेशनल सोसाइटी में कोई भी पोस्टर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये चीजें अगर आप जितनी जल्दी करो उतना आसान है, उतना उतना आपको फायदा होगा। Could you feature someone who has matched into competitive field like derm, ophthalmology and shit? बहुत कम लोग हैं, ठीक है। आई विल से कि शायद 2 3 4 लोग होंगे। और देखो, इट्स नॉट, एवरीबडी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल coming in front of the camera. आप में से आधे लोगों को मैं बोलूंगा क्या है कैमरे पे हम लोग let's make a video on this, a lot of you will back out. So unfortunately you have to look at the preference, comfort and preference level of different people. All I can tell you is कि जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने 2 2 साल रिसर्च की थी अपनी स्पेशलिटीज में, and then they all matched into very competitive specialties. Also, what if someone files a green card petition on your behalf during your J1 status or during day 2? Is that a red flag? Yes, that is a red flag. अगर आप J1 का मतलब है कि आप एक नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हो, तो जब तक आपकी 2 साल की होम कंट्री रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए, या आपका 3 साल का वेवर पूरा ना हो जाए, अगर आप के लिए उस वक्त कोई ग्रीन कार्ड की पिटिशन फाइल करता है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। आप एक टाइम पे 2 कश्तियों में सवार होकर नहीं जा रहे। H1 वीजा जो है वो डुअल इंटेंट है, उसमें आप इमिग्रेशन भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। J1 वीजा इज वेरी स्पेसिफिकली नॉन इमिग्रेंट वीजा, और आप एक तरफ J1 नॉन इमिग्रेंट वीजा रख रहे हो, दूसरी तरफ आप फैमिली बेस्ड वीजा जो इमिग्रेशन वीजा वो अप्लाई कर रहे हो, तो आप दोनों नहीं कर सकते। जब आप J1 अप्लाई करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके वीजा ऑफिसर जो आपसे पूछता है वो ये होती है कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, और बिकॉज दे वांट यू टू कम बैक। और जब आप फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो तब भी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वापस तो नहीं आओगे, लेकिन उसमें दे वांट यू टू स्टे। तो अब इट्स एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? यू कैन डू बोथ एट द सेम टाइम। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, लेट्स से यू हैव अ J1 वीजा, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज के आप वेवर खत्म करें, फिर आप इमिग्रेशन अपनी स्पाउस के थ्रू ले सकते हैं, या होम कंट्री रिक्वायरमेंट पूरी करें। अनफॉर्चुनेटली once you have a J1 visa, you're stuck with it. There is no shortcut around it. Some people do that कि आप waiver अप्लाई करते हो बेस्ड ऑन हार्डशिप वीजा, कि आपका अगर सिटीजन से शादी हुई है या आपका बच्चा है सिटीजन, तो आप कहते हो कि उसको देयर विल बी सिग्निफिकेंट हार्डशिप टू द बेबी और द स्पाउस हु इज अ सिटीजन। तो आप वो कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात की हुई है, तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस दैट वीडियो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जी, आई एम वेरी confused about the travel restrictions on J1. The visa is not valid for the entirety of the residency program. For example, if not, and we have to renew it, is it done in US? Can it be renewed in the US? Does that mean we can't travel back to Pakistan for holidays? काफी लंबा क्वेश्चन है, तो I will break it down. देखो, प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्राम्स आपको इकट्ठे 3 साल का दे देते हैं,
कुछ प्रोग्राम्स आपको 1-1 साल का देते हैं और आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। जब आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, जितना मुझे पता है, आपको आउट ऑफ यूएस जाना पड़ता है। कुछ लोग टोरंटो जाते हैं, कुछ पाकिस्तान चले जाते हैं, बट बेसिकली जब तक आपका वो वीजा स्टैंप होके पासपोर्ट ना आए, यू आर स्टक देयर। तो वो ट्रेडिशनली, जितना मुझे पता है, हर साल रिन्यू कराने के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स, जितना मुझे पता है, वो 3 साल का देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ईदर वे यू कैन ऑलवेज गो बैक होम एंड कम बैक एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड वीजा। लेट्स से आपको 1 साल का वीजा मिला है, तो आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद यू कैन गो होम। अगर आपको 3 साल का मिला हुआ है, तो आप 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब मर्जी दिल करे, यू कैन गो बैक एज लॉन्ग यू हैव अ वैलिड वीजा। प्रॉब्लम ये आता है, अगर आपके पास वैलिड वीजा नहीं है और आप वापस आ जाओ, तो आप दोबारा एंटर होने के लिए आपको वीजा चाहिए होगा। तो दैट्स व्हाट इट इज, देयर इज दिस कंफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद है जी, what if someone has a valid B1 B2 visa during that time period, can they? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप एक टाइम पे J1 भी रखते हो, B1 भी रखते हो, और H1 भी रखते हो, और F1 भी। ऐसे नहीं होता, आपका एक टाइम पे एक ही वीजा होता है। अगर आप J1 ले लोगे ना, तो आपका जो B1 B2 है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका H1 है और आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हो, ग्रीन कार्ड लेते हो, तो आपका H1 वीजा खत्म हो जाता है। तो एक टाइम पे आपका एक ही वीजा होता है। Okay, sorry for so many questions. I would just like to be able to visit family in Pakistan on June. सारी दुनिया करती है. Everybody goes back home, visits their family while on a visa. तो it's not like कि अगर आपको वीजा मिल जाएगा J1B, तो you won't be able to go back home. Yes, you have to plan. ये ना करो कि आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है और आप फिर पाकिस्तान जा रहे हो। You should apply और अपना रिन्यूअल पे जा सकते हो। आप पाकिस्तान जाओ, टोरंटो जाओ, जहां मर्जी करो। और दरमियान में आप ईद पे जाओ या वैसे आप वेकेशंस पे जाना चाहते हो, ऑलमोस्ट एवरीवन आई नो दे डू दैट। सो अब कुछ यूट्यूब के कमेंट्स हैं जिनको मैंने आंसर कर दिया था, लेकिन चूंकि वो इस वीडियो के नीचे आए हुए थे, तो आई थॉट कि आई विल आंसर देम इन लिटिल डिटेल। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑब्जर्वरशिप्स, what to include in an email, what to attach, what to consider। देखो, पहले ना एक सीवी की मैंने वीडियो बनाई, वो देख लो कि हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी। अपनी सीवी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 के जब ईमेल्स लिखते हैं या सीवी बनाते हैं ना, शॉर्ट है, अच्छी बात है, उसको बहुत ज्यादा अननेसेसरी एलैबोरेट ना करो। बड़ा सीधी सी, इफ यू लेट्स से यूर ईमेलिंग, राइट, डियर डॉक्टर तारिक, माय नेम इज मनूर मिर्जा, I'm a fourth year student, or I'm a recent graduate from this medical school, graduated in 2009. I've taken my USMLE exams. My step 1 score is this. My step 2 CK score is this. I have done research before, agar ki hui hai. I have done electives at agar kiya hua hai. I'm looking for a remote research opportunity, or I'm looking for an observership. Um, Please let me know if you have an opening in your department, or or if not, please refer me to someone else who you think is looking for somebody who can help them. Thank you very much. Best regards, your full name. तो बस इतने सही, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने बताया, बस एक दो आदाब का ख्याल रखना। डियर डॉक्टर लास्ट नेम, किसी को फर्स्ट नेम से ना बुलाओ जब तक आप किसी को जानते नहीं यूएस में, तो अदरवाइज इट लुक्स प्रीटी बैड। हेलो सर, आर देयर still chances of matching after failing step to CK? Unfortunately, काफी मुश्किल होता है। देखो, I know 1 or 2 people who have matched after failing step 1 or step 2 CK, लेकिन step 1 और step 2 CK अगर आपका fail हो जाए ना, तो that's a very very big red flag. Yes, you can still match, और वो जो लोग मैच करते हैं वो फिर कोशिश करते हैं स्कोर्स अच्छे हों, और फिर वो रिसर्च में 1-2 साल लगाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, पोस्टर्स, फिर वो they are able to match. Please make a detailed video on getting into radiology residency very soon. Inshallah, within next few days, आपके पास एक बड़ी detailed video हम radiology के लेके आ रहे हैं कि as an IMG, how can you match in radiology? So I have a 2-year clinical gap still managed. I think this is the same question. We already answered it on Insta. Step 3 will significantly improve your chances. Try to take your step 3 and try to score as high as possible. हाउस जॉब का भी ये रिपीट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी बेनिफिट। देखो, बेनिफिट तो आप नॉलेज, मैंने जैसे बताया, आप कहीं से भी कभी भी एक्वायर करो तो उसका फायदा ही होता है। प्रॉब्लम ये कि अगर आपका 1 साल है, तो वेयर इज दैट ईयर बेटर वेल स्पेंट? आई थिंक दैट इज बेटर वेल स्पेंट कि आपको 1 साल अपनी रेजिडेंसी जल्दी खत्म करें। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। यू नो, some people recommend, especially आजकल की सिचुएशन में, पाथवेज, चूंकि आपके ECFMG सर्टिफिकेशन की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको पाथवेज के लिए हाउस जॉब चाहिए, तो उसमें यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर इट, बट आई पर्सनली रिकमेंड अगेंस्ट इट। आई रिकमेंड कि जल्दी से स्टेप्स करो, हाउस जॉब ना करो, आप जल्दी रेजिडेंसी खत्म करो,
एंड देन वंस यू मतलब आप फेलोशिप है, ये पूरा जर्नी काफी लंबा है, राइट? अगर आप लेट्स से इफ यू वांट टू बिकम अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप 3 साल की रेजिडेंसी है, फिर आप चीफ ईयर कुछ लोग करते हैं, फिर हॉस्पिटलिस्ट 1-2 साल करते हैं, फिर साथ रिसर्च करते हैं, फिर 3 साल की कार्डियोलॉजी की फेलोशिप, फिर आप डिपेंडिंग ऑन किस सब स्पेशलिटी फेलोशिप में जा रहे हो, 1-2 साल उसमें जा कर रहे हो, आप इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहे हो, आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कर रहे हो, आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कर रहे हो, आप जनरल सर्जरी करके उसमें फर्दर कुछ भी कर रहे हो, तो 7-8-9 साल की ट्रेनिंग है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि 1-2 साल अपने बचा लो, अगर बचा सकते हो तो आई वुड रिकमेंड दैट। प्लीज एलैबोरेट ऑन डूइंग डबल रेजिडेंसीज, वो मैं आंसर कर चुका हूँ कि बहुत लोग करते हैं, मेडिसिन में कर ली, न्यूरो में कर ली, पीड्स में कर ली, फैमिली मेडिसिन में कर ली, और उसके बाद दे एम फॉर अ रिलेटिवली मोर कंपैरेटिव स्पेशलिटी। इसको भी हम आंसर कर चुके हैं कि थर्ड ईयर मेडिकल स्कूल में यू शुड डू रिसर्च, ट्राई टू स्टडी फॉर यूएसएमएलई, यू नो व्हाइल यू आर स्टडीइंग, और जो जो सब्जेक्ट्स आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, यू नो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जो भी, फार्माकोलॉजी, साथ साथ कैप्लान के लेक्चर्स भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के सुनो, साथ साथ वो किताबें भी पढ़ो। वो बेहतर है कि साथ साथ एमसीक्यूज भी करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, थोड़ा समझ आ जाए कि तैयारी कैसे करनी है। In the current situation, what reason should we give in B1, B2 visa application for visiting US? Observership or step 3 exams? Nay, honestly, I think it doesn't matter. You can do either one. जैसे मैंने अपने आंसर में कहा है कि it doesn't matter, honestly. You can do either one. On visa interview, J1, how should we make sure that the idea... Okay. Can you please explain the process regarding H1B and advice for H1B's visa as you personally recommended? And then you are saying, thank you very much. So you're welcome. I'm glad you find these videos helpful. H1B, देखो, H1B ये है कि especially skilled visa होता है, ठीक है? आप ये बता रहे हो कि you are very very highly skilled clinically या research basis पे, तो उसमें बस वही है टिपिकल कि आपने ये बताना है कि मैं फिलहाल अमेरिका जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, आई एम गोना होपफुली सेटल देयर। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका H1 है ना, इट्स अ डुअल इंटेंट, उसमें आप ये भी कह सकते हो मैं वापस आ रहा हूँ, और उसमें आप ये भी कह सकते हो कि मैं परमानेंटली रहूंगा। एक चीज ये कि यू वांट टू टेक योर स्टेप 3 बिफोर यू अप्लाई फॉर H1 वीजा। तो ये है J1 में बस यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कमिंग बैक। जैसे मैंने बताया कि J1 इज अ सिंगल इंटेंट जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है, H1 इज अ डुअल इंटेंट, उसमें आप इमिग्रेशन में भी फिट हो जाते हैं, नॉन इमिग्रेशन में भी, तो इसलिए उनका इतना ट्रिकी नहीं होता। फर्क सिर्फ ये होता है कि H1 की जो वीजा की प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन सारा कुछ है ना, उसमें प्रोग्राम को बहुत काम करना पड़ता है और पैसे वगैरह जमा कराने पड़ते हैं, तो दैट्स व्हाई प्रोग्राम्स टिपिकली प्रेफर्ड J1 बिकॉज उसमें सारा काम ECFMG करती है, एज कम्पेयर टू H1 में प्रोग्राम्स को पैसे देने पड़ते हैं, उनको काफी पेपर वर्क करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज recent graduate from Lahore preparing for step 2, you're confused between UK versus US. देखो, that's a personal preference. I think कि US की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। I know a lot of people जो कि UK से आते हैं US में ट्रेनिंग करने की। I don't know anybody जो US से UK जाता है। अगर आपने वापस पाकिस्तान जाना है तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, a lot of people don't even know the difference. जनरल आवाम जो है उनको नहीं पता कि यूएस और यूके में क्या फर्क है। यस, आई एग्री कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपकी सैलरी बेहतर होती है और वर्किंग आवर्स कम है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग आई थिंक यू डू मच बेटर इन यूएस, और द नंबर ऑफ इयर्स इन ट्रेनिंग आर relatively less in US as compared to UK, depending on which specialty you're going into. अगर आप ज़्यादा स्पेशलाइज भी कर रहे हो तो यूएसए की ट्रेनिंग जो है जल्दी खत्म हो जाती है। Let's say you want to become a cardiologist or interventional cardiologist, interventional gastroenterologist, you know, colorectal, you know, finally complete your training sooner in US. electives you can, देखो, you can always take it before you graduate. तो बहुत से लोग फाइनल ईयर के एग्जाम देते हैं and then there's a significant amount of delay by the time the result comes in. So technically you can do electives before you graduate. So let's say if you took your exams in January but you got your degree in June, तो आप जनवरी से जून तक electives कर सकते हो। फिर इंडिया में I know they don't graduate before the end of the internship, जिसे हम पाकिस्तान में हाउस जॉब कहते हैं, so they can do electives even during their house job internship because they technically did not graduate and don't have the degree, and that's what a lot of people I know from India, they do that. Okay, now the question is, many students are recently promoted to 4th year MBBS in April. They're planning on taking step 1 in 2021, and then it's going to be
pass fail, is it beneficial? इस पे यार देखो, I have done a complete video, and I would suggest you to watch that video जो मैंने लिंक में भी डाली हुई है, आप उसको सुन लो। बेसिकली मैंने उस वीडियो में यही कहा है कि अगर आपके स्कोर्स जो हैं 240 एंड अबव आ रहे हैं प्रैक्टिस एग्जाम्स में, सो गो हेड एंड टेक इट नाउ। लेकिन व्हाट यू डोंट वांट इज कि आप जल्दी दे दो और आपके स्कोर्स भी लो आए। तो अगर इफ यू थिंक यू आर गोना स्कोर वेरी हाई 250 टू 60 में, आपके प्रैक्टिस एग्जाम्स में भी अच्छा आ रहे हैं, तो आप पास फेल होने से पहले पहले दे दो। लेकिन अगर आप जो स्कोर्स आपके कम आ रहे हैं, तो बेहतर है कि अगर आप जनवरी फेब में दे दो, ताकि आपको कोई एडेड एडवांटेज नहीं होगा, तो उसका कोई एडिशनल नुकसान भी नहीं होगा, तो वो आप तब दे दो। दूसरी बात ये, वन मोर थिंग दैट आई सजेस्ट नाउ इज लाइक, आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग स्टेप वन अर्लियर। दे शुडंट स्पेंड ईयर्स, और लाइक लंबी तैयारियों का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप 270 वाला और 210 वाला सब इकट्ठे हो गए, तो पास फेल में लोगों को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी एग्जाम्स दें, ताकि दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम just studying a lot and then scoring high, क्योंकि एंड पे सिर्फ पास फेल है। I'm requiring IMGs. I'm done with both step 1 and 2. I want to do research. Is there any opportunity for IMGs to get research without any contacts? इसको देखो, इस पर actually I think that was my first video on this channel, or second third video, one of the very initial ones। ये बड़े डिटेल में मैंने आंसर किया उसको कि आप you need to prepare your CV, write an email and send it to as many people as you could find। उनकी ईमेल ढूंढो अपनी स्पेशलिटी में, फर्स्ट फिगर आउट विच स्पेशलिटी यू वांट टू गो इनटू, और फिर ईमेल करो लोगों को। प्लीज वो वीडियो आप जाके देख लो, दैट विल हेल्प यू। उसमें काफी डिटेल में मैंने इस चीज को आंसर किया है। कतर रेजिडेंसी, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो अ लॉट अबाउट कतर रेजिडेंसी, सो आई कैंट आंसर दैट। ओके, अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने लोगों ने मुझे कहा था कि भाई प्लीज कीप आवर नेम एनोनिमस, तो आई ट्राइड माय बेस्ट। देखो, I request you guys again, please don't send me messages, private messages, Facebook पे, Insta पे, जो भी questions हो, the YouTube comments में डाल दिया करो, मेरे लिए मुश्किल होता है काफी ज्यादा, and I will appreciate, फिर भी काफी लोग करते हो, चलो। तो let's see what do I have। there's a 2013 graduate, radiology में FCPS part 1 किया आपने, and then you're traveling between UK and Pakistan। currently preparing for step to seek, have a passion for radiology, remote। देखो, इसका वही है कि रिसर्च आप पूछ रहे हो कैसे ले सकते हो, उसकी वो वीडियो देख लो आप जो मैंने बताया कि हाउ यू कैन गेट रिसर्च इन यूएस। और रेडियोलॉजी में आने के लिए 4 पाथवेज हैं, 3 या 4 पाथवेज हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू क्लासिफाई देम। उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वॉच दैट एज वेल। For the next question I have is, for someone who has completed all steps including step 3 in first attempt and working as a medical assistant but not matching, how can I improve my chances? देखो, इस पे मैं एक पूरी डिटेल बता चुका हूँ, प्रिडिक्ट इफ यू विल मैच एंड व्हाई आई डिडंट मैच। वो वीडियो देख लो। मुझे नहीं पता आप क्यों मैच नहीं किया, मैंने आपकी सीवी नहीं देखी, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं देखे, स्कोर्स नहीं मुझे आपके पता। आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट मैच, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, राइट? और डिपेंडिंग ऑन क्या वजह है, उस चीज को आपने फिक्स करना है। अगर आप सारे एग्जाम्स पास कर चुके हो, स्कोर भी अच्छे हैं, मेडिकल असिस्टेंट की आप जॉब कर रहे हो, तो आप उससे रिसर्च कर लो, थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस आपका आ जाए, थोड़ी सीवी बेहतर हो जाए। और दूसरा, फिगर आउट क्या है वजह, आपके स्कोर्स कम थे या आपकी सीवी या पर्सनल स्टेटमेंट में ब्लंडर्स थे, क्या वजह है कि मैच नहीं हुआ। तो वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने कहा है कि प्रेडिक्ट इफ यू विल मैच और नॉट, एंड फिगर आउट व्हाई यू डिडंट मैच। Next I have is, I have a very specific question that I wanted to ask is, so I'm starting my final year MBBS. I took my USMLE step 1 exam with the intention of applying for electives. However, my university is not allowing anyone in my batch to apply for electives even after final year in 2022, every elective available now। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव नहीं कर रही, तो यू कैंट रियली गो फॉर electives। उसमें फिर टॉक टू पीपल एट योर यूनिवर्सिटी, आस्क देम व्हाई दे डोंट लेट यू गो फॉर electives। समर वेकेशंस में देखो आपको कहीं मिल जाए, अगर वो अलाउ करते हैं, वरना जिसका मैंने बताया कि फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन से पहले पहले, फाइनल ईयर एग्जाम्स देने के बाद ग्रेजुएशन से पहले का जो टाइम होता है, उसमें देखो आपको कोई अगर दे देता है electives। और ऑब्जर्वरशिप्स जो है वो बहुत मुश्किल है इस वक्त, आई एग्री। so yeah, you can apply for B1 B2 visa on the basis of observership, but actually it is relatively tough। अच्छा जी, next I have somebody who sent me a message
they don't want to discuss it publicly. A non-US citizen, graduate of 2018, low scores in USMLE Step 1, 223, planning on taking Step 2 CK, apply for B1, B2 visa. Last month was their interview. Um, considering it on behalf of strict research, यार ये देखो आपका क्वेश्चन ये है कि if your scores are okay and you don't have any clinical experience, should you apply for match? Yes, you should, absolutely. The thing is, there is no way for anybody to know with 100% certainty कि आपका मैच होगा कि नहीं होगा. आप ट्राई करते हो, बहुत से लोग हैं जिन जो लकी हो जाते हैं, उनका मैच हो जाता है. हर बंदा उन्हें कह रहा होता है कि आपका मैच नहीं होगा, उनके स्कोर्स भी कम होते हैं. उनके पास कोई बहुत से लोग हैं जिनके वो बहुत अच्छे अच्छे स्कोर होते हैं, इलेक्टिव्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, उनका मैच नहीं होता. तो ऑलवेज अप्लाई अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है ना. बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि पैसे थोड़े हैं. अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो आई विल रिकमेंड डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और कोशिश करो कि साथ आपको कोई ऑब्जर्वरशिप्स कुछ मिल जाए. जब तक आप यूएस में हो, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कोई ना कोई वॉलंटियर काम करो, ऑब्जर्वरशिप्स, एक्सटर्नशिप्स, वॉलंटियर रिसर्च, कुछ भी. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज अच्छा, there is a question कि भाई I mentioned in my videos that there are monthly expenses varies between the state and the city you're living in. So if I can suggest some states or cities that are budget friendly, यार अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क लाइक दैट. ठीक है. मतलब ऐसे नहीं होता जब आपको रेजिडेंसी में यू आर नॉट सेविंग मनी. ठीक है, यू कैन, लेकिन आपको जहाँ रेजिडेंसी मिलती है आप ले लेते हो. ऐसा नहीं होता कि भाई अच्छा चलो फिलाडेल्फिया में रहना महंगा है या न्यूयॉर्क में रहना महंगा है तो मैंने बॉल्टीमोर में जाके रहना है और मैंने उधर रेजिडेंसी नहीं मिलती. रेजिडेंसी अगर आपको मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात है. बाकी बजट फ्रेंडली देखो, जितनी भी जगह है ना वहाँ पे, कोई भी जगह हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो जो कि बहुत महंगा है, आप मैनहट्टन में रहते हो, आप लॉस एंजलिस में रह रहे हो, शिकागो में रह रहे हो, इतने पैसे आपको मिल जाते हैं कि आप डिसेंटली रह सकते हो. अच्छा खासा आप अपना अपार्टमेंट या टाउन हाउस लेके आप रह सकते हो. तो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न ऑनेस्टली, एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी इवन अ फैक्टर फॉर यू. हाँ ठीक है, वो जब आप इंटरव्यूज पे जाओगे ना तो अमेरिका बहुत बड़ा है, 52 स्टेट्स हैं और हर स्टेट के बहुत सारे शहर हैं. तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू कि भाई कहाँ कहाँ जाओ. इन जनरल जो है वो से कि जब आप जाओगे आप उधर जाके देखो, जिधर भी इंटरव्यू करने जा रहे हो, कि वहाँ पे टाउन हाउस कितने का रेंट पे मिल रहा है, कितने बेडरूम का, अपार्टमेंट कितने का, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा. अच्छा, दूसरा है जी, माई वाइफ वुड बी डूइंग रेजिडेंसी देयर on J1 visa. So being her husband, can I work on a spouse visa? Yes, you can. You can as a on a J2 visa you can work. बट उसके बाद होम कंट्री रिक्वायरमेंट होगी 2 साल की, या फिर आपको वेवर करना पड़ेगा, एक वेवर जॉब किसी relatively remote area में 3 साल. So next we have is I'm a 2017 graduate, done with step 1 and step 2. Received my step 1 score, which is 218. My dream was to get a neurosurgery residency. I have 60 research publications. Need to make a decision since my FCPS 1 validity is until November of this year. It's a very tricky situation. देखो स्कोर बहुत आपके unfortunately they're not great. और मेरे भी ऐसे थे, मेरे 220 थे, but I managed to get into interventional radiology. Neurosurgery is very competitive, relatively less competitive than interventional radiology, but still one of the most competitive ones. So what I would suggest again कि देखो अगर आप I know people who do 4 years of research just to get into neurosurgery. तो अगर आप 3-4 साल रिसर्च करते हो यूएस में आके, पीएचडी लोग करते हैं, यू नो, टू गेट इनटू दीज कंपैरेटिव स्पेशलिटीज, तो आई थिंक आपके स्कोर से ज्यादा फिर आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट होता है. इट्स नॉट ऑल, द क्वेश्चन इज कि आप कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहते हो. आर यू विलिंग टू डू रिसर्च फॉर 4-5 years जस्ट टू गेट इनटू न्यूरोसर्जरी? हो सकता है आपकी 2 साल की रिसर्च से हो जाए, लेकिन you should be ready for that if that's especially with your scores. और दूसरा ये, what I would suggest, 2-3 साल की रिसर्च करो, फिर प्रीलिम सर्जरी करो 1-2 साल की, और उसके बाद देखो आपको न्यूरोसर्जरी मिल जाए. Typically all the people IMGs I know who matched into neurosurgery, they did that 2 से 5 साल रिसर्च की, फिर 1-2 साल प्रीलिम सर्जरी की, फिर न्यूरोसर्जरी उन्होंने पकड़ी. Okay, next question we have is, what are my thoughts on family medicine? Do they have decent lifestyle, salary?
if you work part time. uh, yeah, family medicine का lifestyle काफी अच्छा flexible है. You can work as much as you want. आप अपना clinic खोलो, 20-20 घंटे काम करो, daily काम करो, और आप part time job भी कर सकते हो. बहुत सी जगहों में hourly pay होती है. तो that's purely based on ये जितनी भी आपकी specialities है ना, चाहे surgery हो चाहे family medicine हो. ठीक है, सर्जरी में आपकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वंस यू बिकम एन अटेंडिंग थिंग्स चेंज. यू कैन ऑलवेज गेट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू वांट. यू जस्ट नीड टू मेक सम सैक्रिफाइस कि शायद आप एरिया इतना अच्छा नहीं लोगे या पैसों को कॉम्प्रोमाइज कर लोगे. यू विल गेट अ बेटर लाइफस्टाइल. तो ये चीजें इसी तरह फैमिली प्रैक्टिस में, इफ यू वांट टू मेक अ लॉट मोर मनी, यू विल probably open your own clinic, put in a lot more hours as compared to joining another hospital or some group and just working part time. तो yes, overall family medicine का जो lifestyle है, it's decent, it's very good, but you can go to some places जहाँ पैसे ज़्यादा लोगे, they will make you see a lot of patients, so you can get exhausted. Okay. So next I have is I'm a medical student from Sims. I am done with my step 1 and 4th year, got 244. Now I'm preparing for step 2 CK, looking for electives. My college is not on VSLO. So I have very limited options. Can I recommend a university hospital where I can apply? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोविड की वजह से अभी तक इलेक्टिव्स खुले नहीं है. जैसे खुलेंगे हम देखेंगे. आई डोंट नो एनी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज ऑफ राइट नाउ दैट आर ऑफरिंग इलेक्टिव्स टू आईएमजीज. अमेरिकन ग्रेजुएट्स का डिफरेंट है, आईएमजीज का अभी तक मुझे नहीं पता. हो सकता है next few weeks things might change. All right, that's it. So hopefully you all found this video helpful. I tried my best to answer all your questions. I hope you learned something from it. If you did, please like the video, subscribe to the channel, and share it with others. And like I always say, never give up, never lose hope. Bye.